Hello everyone and welcome to EduLive. Today in this video we will cover a Bharat Our Land chapter for specially class 9 CBSE students. तो इस वीडियो में हम NCERT सॉल्यूशन along with its explanation कवर करेंगे कावेरी इंग्लिश टेक्स्ट बुक का चैप्टर कॉल्ड भारत अवर लैंड. तो स्टार्ट करते हैं. तो इस वीडियो में हम लोग बेसिकली कवर करेंगे रिफ्लेक्ट एंड रिस्पॉन्ड एंड सेकेंड इज चेक योर अंडरस्टैंडिंग. इसमें सारे पोएम के फीचर्स, रेफरेंस, मेटाफर्स कवर किए जाएंगे. एंड थर्ड इज लिटरेरी डिवाइसेस, सिंबलिज्म, इमेजरी, हाइफन्स, हाइपरबोल एक्सेट्रा. एंड फोर्थ पॉइंट इज वी विल कवर इज ओड एंड एल्यूजन. इसमें हम लोग ऑड एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करेंगे, एल्यूजन को डिकोड किया जाएगा. फिफ्थ इज क्रिटिकल रिफ्लेक्शन. We will analyze all 5 possible questions. And sixth is answers and question. तो इसमें फर्स्ट से लेके फिफ्थ तक सारे क्वेश्चन का डिटेल्ड आंसर गिवन होगा. सेवेंथ इज वोकेबलरी इन कॉन्टेक्स्ट. एंड एट्थ इज स्पीकिंग एंड राइटिंग. इसमें पैराग्राफ राइटिंग, स्पीकिंग एक्टिविटी सभी को कवर किया जाए. ओके, स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट इज रिफ्लेक्ट एंड रिस्पॉन्ड. फर्स्ट इसकी कैटेगरी है स्टेट्स एंड रीजन. तो इसके एग्जाम्पल्स as far from the national anthem is Punjab, Sindh, Gujarat, Maratha, Utkala also called Odisha, Banga also called Bengal, Vindhya, Himachal. अगर कैटेगरी माउंटेन रेंजेस की है तो इसके एग्जांपल है हिमालय, विंध्या हिल्स. कैटेगरी फॉर रिवर्स एग्जांपल्स आर गंगा, यमुना. एंड फॉर अदर रेफरेंसेस के एग्जांपल हैं द्रविड़ा एंड इंडिया एज ए होल कॉल्ड भारत. ऑब्वियस. Okay, reflect and respond, second part, odd one out. Okay, so इसका क्वेश्चन है what do the words जय हे conveys. तो जय हे means victory to you or may you be victorious. Its repetition expresses a heartfelt prayer for India's glory, unity and prosperity, reflecting patriotism, hope and devotion to the nation. तो इसका मतलब यही है कि हमारी विक्ट्री, हम सभी की विक्ट्री है. और इसका काफ़ी बार रिपीटेशन किया गया है. ये इसलिए किया गया है क्योंकि ये एज अ हार्टफेल्ट प्रेयर एक्सप्रेस होती है फॉर इंडियाज यूनिटी, भाईचारा, प्रॉस्पेरिटी एक्सेट्रा. ओके, ऑड वन आउट. चूज द वर्ड दैट डज नॉट मैच द अंडरलाइंड वर्ड. तो फर्स्ट वर्ड इज पियरलेस एंड द गिवन ऑप्शंस आर वैल्यूएबल, इनकम्पैरेबल एंड अनमैच्ड. तो इसमें वैल्यूएबल इज द रॉन्ग वन बिकॉज पेयरलेस मीन्स हैविंग नो इक्वल. तो इसमें इनकम्पैरेबल एंड अनमैच्ड satisfy the meaning of the peerless. So valuable does not fit the word called peerless. Okay. Second is sanctified. Options are blessed, purified and applauded. So applauded is the wrong one क्योंकि sanctified का meaning होता है blessed or made holy. Third is auspicious and the given options are fortunate, fantastic, favorable. So fantastic is the wrong word because auspicious का meaning होता है favorable और fortunate. And the fourth is hoary antiquity. इसके options हैं ancient time, recent past and time immemorial. तो इसका जो wrong option है, wrong answer है वो है recent past क्योंकि इस word का meaning होता है ancient. Okay, check your understanding. First is historical greatness. Second is Himawant. Third is Ganga. Fourth is Upanishads. Fifth is warriors. Sixth is sages. Seventh is Brahma knowledge. Eighth is Buddha. Ninth is peerless and 10th is praise her. Check your understanding. Second, features of the poem. तो इसका फर्स्ट है impact on readers. तो रीडर्स का क्या मूड क्रिएट किया, रीडर्स का क्या इफेक्ट किया है इस पोएम ने. तो पोएम क्रिएट्स अ मूड ऑफ प्राइड, एडमिरेशन, रिवरेंस एंड पैट्रियोटिज्म. इट्स सेलिब्रेटरी टोन एंड रिपीटेड रिफ्रेन इंस्पायर्ड जॉय एंड डीप इमोशनल कनेक्शन विद इंडियाज हेरिटेज. तो इस पोएम ने हम सभी रीडर्स को एक एज अ प्राइड एंड पेट्रियोटिक फीलिंग प्रोवाइड की है. सेकेंड इज व्हाट इज पोइट्स attitude. The tone is reverential, celebratory and patriotic, expressing pride, devotion and awe for India's natural, spiritual and cultural richness. Third is rhyme scheme. तो
So the poem does not follow a strict rhyme scheme. It has a loose pattern with occasional rhymes and a chant like free verse rhythm like a hymn और a prayer. तो इसमें पोएट ने कोई भी स्ट्रिक्ट राइमिंग स्कीम फॉलो नहीं की है. इसको बहुत ही कैजुअल वे में एज अ प्रेयर ही प्रस्तुत की गई है. फोर्थ इज पर्सोनिफिकेशन. तो पर्सोनिफिकेशन होता है अगर किसी भी अननेचुरल थिंग, किसी भी नॉन लिविंग थिंग को ह्यूमन क्वालिटी से अगर कंपेयर किया जाए तो उसको पर्सोनिफिकेशन कहते हैं. लाइक गंगा इज डिस्क्राइब्ड एज जेनरस, which is obviously a human quality which is attributed to a river. Okay, India is referred to as she and her throughout, personifying the land as a woman deserving of praise. Check your understanding. Third, refrain, metaphor. Third is impact of the refrain. She is peerless, let's praise her. तो इसमें हो रहा है acts as a rallying cry urging readers to celebrate India. Repetition reinforces that India is unmatched and worthy of honor. इस लाइन का काफी बार रिपीटेशन किया गया है, तो इसका बेसिकली यही मीनिंग है कि इंडिया को काफी ज्यादा, इंडिया बिल्कुल ही अनमैच्ड है और ये ऑनर के वर्दी है. And it gives the poem a chant like hymn like quality. As a prayer एक quality provide करती है. The word let's make it inclusive, creating collective pride, builds an emotional crescendo, ending each stanza with a shared declaration. Fourth is complete the sentence. This sunny golden land suggests that India is. Answer is India is a land of warmth, radiance, and abundant richness, both materially and spirituality, glowing with light, life, and unmatched splendor. Symbolism and imagery. Symbolism. Match the following symbols to their meaning. So symbol is Himavant, also called Himalayas. तो इसका meaning है permanence, strength, and geographical greatness of India. हिमालयस ऑब्वियसली इंडिया की जोग्राफिकल ग्रेटनेस को ही सजेस्ट करता है. सिंबल है गंगा, तो इसका मीनिंग है स्पिरिचुअल प्योरिटी, जेनरोसिटी एंड लाइफ गिविंग फोर्स ऑफ इंडिया. सिंबल इज उपनिषद, तो इट सजेस्ट इंडियाज इंटेलेक्चुअल, फिलोसफिकल एंड स्पिरिचुअल विजडम. एंड फॉर सिंबल इज गैलेंट वॉरियर, इट सजेस्ट करेज, सेक्रीफाइस एंड मार्शियल हेरिटेज ऑफ इंडिया. The divinest music suggests India's rich classical, artistic, and cultural tradition. For imagery, there are two examples. Okay, first is visual imagery. This mighty Himavant is ours. There is no equal anywhere on earth. Creates a vivid picture of grand and majestic. तो इसमें एक विजुअल, पूरा मतलब विजुअल तरीके से बताया गया कि ये जो हिमालय है वो हमारा है और इसके जैसे ग्रेटनेस कहीं पे भी अर्थ में नहीं है. ओके, ऑडिटरी इमेजरी. द डिवाइनेस्ट म्यूजिक हैज बीन हियर्ड हियर creates an auditory image of melodious chants appealing to the sense of hearing. The seventh है impact of hyphens in the first stanza. Select true option. So first is true. Creates deliberate pauses to reinforce the sense of admiration and pride. Second is false. The poem does not discuss India's weakness. It is purely celebratory. तो पोएम का पूरा थीम ही यही है कि वो इंडिया की ग्रेटनेस को ही सेलिब्रेट कर रहे हैं. थर्ड इज ट्रू. lends a lyrical, measured and a chant-like rhythm to the poem. Fourth is false. The poet's tone is confident and absurd, not hesitant. Fifth is true. Presents a key element before the hyphen and a strong assertion of uniqueness after it. ओके, एट्थ है हमारा हाइपरबोला. हाइपरबोला किसी भी चीज को एक्सेजरेट करके अगर बोलना हो तो उसको कहते हैं द माइटी हिमावंत, नो इक्वल एनीवेयर ऑन इन अर्थ. तो उसको एक्सेजरेट करके बोला गया है द हिमालयस आर ग्रेटेस्ट बट नो इक्वल एनीवेयर ओवर स्टेट्स टू कन्वे इंडियाज प्राइड. ओके, सेकेंड इज विच अदर रिवर कैन मैच हर ग्रेस. So it implies that no river compares to Ganga, elevating her spiritual supremacy.
Ninth point is this poem is an ode. Examples that prove it. The examples are deep admiration. Every stanza praises India, its mountain, rivers, स्पिरिचुअल्स वॉरियर्स सेजेस म्यूजिक एंड फिलोसफीज। तो हर स्टैंजा में आप इस पोएम के हर स्टैंजा में आपको इंडिया की ही प्रेजेस दिखेंगे, वो भले ही आपको थ्रू माउंटेन रिवर्स वॉरियर्स और एक्सेट्रा के थ्रू मिले। Elevated language, words like mighty, peerless, divine, sacred and auspicious give a grand and formal tone. And the third is emotional intensity. The repeated refrain, she is peerless, let's praise her, is charged with enthusiasm typical of an ode. इस लाइन को काफ़ी बार रिपीट किया गया है ताकि हम इंडिया में जो यूनिटी पैट्रियोटिज्म है उसको कन्वे किया जाए। The reverence for subject. India is treated almost as a deity, referred to as she called peerless and urged for collective praise. Tenth is allusion. Match the allusion to its meaning. Okay, first allusion is the sacred Upanishads are our. तो इसका मीनिंग है allusion to ancient Indian scriptures symbolizing deep wisdom and enlightenment, philosophical text forming the base of Hindu thought. Second is here Brahma knowledge has taken root. Allusion to Brahma Vidya, the highest spiritual knowledge in Indian philosophy concerned with understanding ultimate reality. Okay, third is and the Buddha preached his dhamma here. Direct allusion to Gautam Buddha who attained enlightenment and preached dhamma at बोध गया एंड सारनाथ ऑन इंडियन सॉइल। तो इसमें गौतम बुद्धा को ही रिलेट किया गया है जिन्होंने एनलाइटमेंट अटेन की थी एंड धर्म को प्रीच किया था बोध गया एंड सारनाथ पे। द माइटी हिमावंत इज आवर्स, देयर इज नो इक्वल एनीवेयर ऑन अर्थ। The generous Ganga is ours, which other river can match her grace? The sacred Upanishads are our, what scripture else to name with them? Okay, first is the mighty refers to the dash to the Himavan. So the word mighty refers to the immense size, power, strength and towering grandeur of the Himavant, commanding awe and reverence. Mighty refer कर रही है power, strength of the Himalayas. The second is the question mark at the end of line 4 and 6 is used to emphasize a point. These are theoretical questions asserting that nothing can compare, not a genuine queries. They emphatically declare the peerless greatness of the Ganga and Upanishads. Okay, third is why does the poet use the word generous to describe Ganga? Generous word को क्यों यूज किया गया है गंगा को डिस्क्राइब करने के लिए? Because the Ganga has freely given water, sustenance and spiritual purification to millions for thousands of years. It nourishes the Indo-Gangetic plains and cleanses soil, giving freely without asking anything in return, personified as a benevolent motherly figure. तो इसमें गंगा को पर्सोनिफाई किया गया एज अ मदरली फिगर को। Before this, why has the movement of Ganga has been described as graceful? Okay, so the Ganga flows with serene, majestic and dignified quality, unhurried and composed as it moves through the plains. The word grace also has a spiritual dimension. The Ganga is revered as Ganga Devi, believed to have descended from heaven, making her flow divine and elegant. Personifying her movement as graceful elevates her from a mere river to a symbol of divinity and benevolence. तो यहाँ इस पोएम में गंगा को एज अ गंगा देवी रिवर्ट किया गया है। इसको माना जाता है कि गंगा को हेवन से डिसेंड किया गया है, इसकी वजह से इसका जो फ्लो है वो काफ़ी डिवाइन है एंड एलिगेंट है, काफ़ी प्योरिटी है और इसको एज अ मदर फिगर भी पर्सोनिफाई किया गया है। ओके, फिफ्थ इज फिल इन द ब्लैंक्स। द उपनिषद्स आर डैश इन देयर विजडम एंड स्पिरिचुअल डेप्थ। ओके, आंसर इज अनमैच्ड। What scripture else to name with them asserts no other scripture can be placed alongside them. They stand supreme in philosophical and spiritual insight. Critical reflections answer question.
First is, how does the poem reflect a strong connection to cultural identity and heritage? The Himavant, which is equal to geographical identity, Ganga equals to cultural and spiritual identity, Upanishads intellectual heritage, and warriors and sages को इक्वल किया गया है हिस्टोरिकल आइडेंटिटी से. ब्रह्मा नॉलेज एंड बुद्धा धर्म्स को कंपेयर किया गया है डुअल स्पिरिचुअल हेरिटेज से. डिवाइनिस्ट म्यूजिक को किया गया है क्लासिकल म्यूजिकल tradition. Together, these paint a composite portrait of India's unmatched civilization. The second question is, what can you infer about the poet's attitude from the repeated phrase, "She is peerless, let's praise her"? So, answer is deep patriotism. India is treated as a beloved mother figure. Unwearying pride, peerless reveals absolute conviction. India is unequalified. Desire to inspire others, let's praise her, is a collective call to action. And the fourth is reverence bordering on worship. Repetition gives him like devotional quality. तो इसमें इंडिया को एज अ मदर फिगर की तरह से ट्रीट किया गया और इस पोएम को काफ़ी ज़्यादा प्रेयर एंड हिम लाइक क्वालिटी दी गई है रेदर देन strict rhyming scheme को फॉलो करे बिना. The third question is, what does many a sage has sanctified this land suggest about India's spiritual heritage? India has been home to countless sages like Vyasa, Valmiki, Adi Shankaracharya, Kabir, and who left a deep spiritual imprint. Sanctified means these steps and wisdom consecrated the very soil. Many a sages implies an unbroken line of spiritual masters across centuries, reflecting continuity and depth. The fourth question is, how does the poet connect warriors and music to India's greatness? Poet ने वॉरियर एंड म्यूजिक को इंडिया की ग्रेटनेस से कैसे कनेक्ट करा है? तो ग्लैंड वॉरियर्स हैव लिव्ड हियर, एक्नॉलेज इंडियाज मार्शियल हेरिटेज, स्ट्रेंथ एंड करेज एंड सैक्रिफाइस. द डिवाइनेस्ट म्यूजिक हैज बीन हर्ड हियर, elevates India's classical music to a divine level, representing it as a vehicle of devotion and beauty. By placing warrior and music together, the poet represents India as a complete civilization, powerful in arms, exquisite in art, and rich in spirit. Fifth question is, how does this poem foster a sense of national pride? National wonders like examples are Himalayas, Ganga reminds India to be incomparable geographical heritage. Intellectual wealth like Upanishads, Brahma knowledge, and the Buddhism highlights India's profound philosophical contribution. Repeated use of ours, the mighty Himavant is ours, creates a sense of collective ownership and belonging. The refrain, "She is peerless, let's praise her," act as a rallying cry, uniting all India in shared celebration. तो नेचुरल वंडर जैसे कि हिमालय, गंगा हैं, तो ये हमारी इंडिया की जियोग्राफिकल हेरिटेज को शो करते हैं कि ये बिल्कुल ही इनकम्पेरेबल हैं टू द अक्रॉस द वर्ल्ड. और लाइक इंटेलेक्चुअल वेल्थ लाइक ब्रह्मा नॉलेज, बुद्धा धर्म्स, ये इंडिया के फिलोसफिकल कंट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करते हैं एंड एक्सेट्रा. वोकैबुलरी इन कॉन्टेक्ट्स. Okay, first is keywords from the poem along with its meaning. So first is peerless, means having no equal, incomparable. Second is sanctified, made holy, blessed. Third is auspicious, favorable, indicating future success. Fourth is hoary, meaning ancient, very old. Fifth is gallant, meaning brave. Sixth is dhamma, meaning teaching, righteous path. Okay, next is suffix table. Add suffix to form new words. Okay, base words are mighty. The suffix we will use is ILY. तो new word is mightily. Okay, grace का होगा इसमें हम लोग suffix यूज करेंगे full. तो new word होगा इसमें graceful. Beauty will be beautiful. Divine will be divinely.
Okay, next is speaking activity. The topic है speak about aspects of your villages, town, city that you feel are an assets, like geographical, cultural or historical, कुछ भी चलेगा. Okay, response one is urban planning. So Chandigarh is one of the few cities in India planned from scratch as a modern city, designed widely cautious from neat sectors, wide roads, green belt and no traffic congestions, making it one of the most livable cities. Okay, second is the green city. If I had to describe my city in one word, green. The Rock Garden, Sukhana Lakes, Asia's largest rose garden, and numerous sectors parks make the city feel like a garden. I am fascinated by how people take pride in keeping Chandigarh clean. Okay, third is cultural richness. So Chandigarh sits at the confluence of Punjab and Haryana. Two vibrant culture foods like paratha dal, Punjabi lassi is a cultural experience. The nearby Shivalik hills form a stunning backdrop and offer trekking and natural walk. Shivalik hills as a ट्रैकिंग वॉक्स और मतलब नेचर वॉक्स के लिए काफ़ी एक स्टनिंग बैकड्रॉप है और फूड्स तो वहाँ का एक कल्चरल एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हैं. ओके, राइटिंग टास्क. अ प्लेस दैट स्टेड इन माय मेमोरी. Okay, write a paragraph about a place you have visited which has stayed in your memory. तो इसमें हम लोग लिखेंगे like one of the most unforgettable places I have ever visited is the town of McLeodganj in Himachal Pradesh. My family and I traveled there during the summer holidays to escape the heat of the plain and to experience the mountains. We stayed at the small guest house with a balcony that looked directly at the Dhauldar range, and every morning I woke up to the breathtaking sight of snow-capped peaks emerging from the clouds. During our stay, we visited Namgyal Monastery, walked through the lively Tibetan market, tasted momos and thupka at a small cafe, and trekked to Tirund, a high meadow from which the view was so vast and glorious that I stood speechless for several minutes. The fresh mountain air, the sound of prayer flags fluttering in the wind, and the gentle chanting from the monastery have stayed with me long after the trip ended. It was a place that made me feel both very small and very alive at the same time, and I hope to return one day. ओके, तो इस पोएम के की थीम्स एंड टेकअवेज हैं. फर्स्ट इज पेट्रियोटिज्म एंड प्राइड. तो पूरी की पूरी पोएम ही पेट्रियोटिज्म और प्राइड इंडिया के लिए शो करती है. तो पोएम इज अ heartfelt ode celebrating every dimension of India, geographical, spiritual, cultural and historical. तो जो जितना भी इंडिया का हो सकता था डायमेंशन, लाइक ज्योग्राफिकल में हिमालय, गंगा, स्पिरिचुअल, कल्चरल में फूड्स एंड व्हाटएवर, सभी को पूरा पोएम ने celebrate किया every dimension of India. Second is strength and wisdom. Gallant warriors and sages together represent India's dual strength, martial courage and philosophical wisdom. Third is spiritual heritage. India's spiritual greatness through the Upanishads, Brahma Vidya and Buddha's Dharma is portrayed as unmatched globally. उपनिषद, बुद्धास धर्मा एक्सेट्रा को ग्लोबली अनमैच्ड है. इसको पोर्ट्रे किया गया है थ्रू दिस पोएम. ओके, नेचर एज आइडेंटिटी. हिमालयस एंड गंगास आर नॉट जस्ट natural features, they are the symbol of India's enduring identity and soul. So that's all in this video. So for more updates about this poem or related to this book, make sure to like, comment and share.